Okay, can everyone see me and hear me properly? Please write it in the chat room. हाय गुड इवनिंग। सभी लोगों को सुन रहा सब लोग सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं सब कुछ ठीक से। चैट रूम में थोड़ा लिख दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। कुछ देर वेट करेंगे, सभी लोग आ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। आज का क्लास बहुत ही लेंदी होने वाला, मतलब लेंदी मतलब बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी 12 व्यूअर्स ही हैं, तो 70-80 लोग आ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, या एट दैट टाइम द माइक वाज फार अवे। आई वॉज ऑलरेडी सेटिंग अप द थिंग। या डेफिनेटली अलर्ट्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ना। आज आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द अलर्ट्स, हाउ टू यूज़ देम ऑन इंट्राडे, the alerts, how to use them on swing trading, the momentum swing thing that we have created so far, that thing also will be discussed. And also the quick mode, how to use the quick mode to take the trades within the first 15 or 20 minutes, maximum first 30 minutes, the way I take the trades. And also the expiry, how to trade on the expiry and how to understand the dynamic. I have not covered the dynamic so far, so we will be covering the dynamic zones as well during the expiry session. And also we will be discussing how to use multiple modes, like the daily zone, the weekly zone, the monthly zone, everything together, all the single things. So we will compile all the things related to the zone, related to the index and the intraday so far, and then we will close the class. ओके, तो बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया। पता नहीं कितना टाइम लगे, क्या हो। बस 12-13 लोग ही हैं, तो स्टार्ट कर दें, या लोग बोलेंगे मुझे बाद में ब्लेम करेंगे, ये वो प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 बजे को बोला था ना मैंने। चलिए, ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीबडी, एंड विल बिगिन। अब स्टार्ट करें क्या? गुड इवनिंग। हाँ, ओके, मैं सबको देख पा रहा हूँ, सबको सुन पा रहा हूँ। देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग फर्स्ट. I have started recording the class. Now let me tell you something very fast. That is, YouTube lags a little bit. When we take the class in YouTube, it lags a little bit, like 3 to 4 second max. Why it does that? It does that to ensure that you are watching the best possible quality. Okay? Sometimes it happens that. I hope you won't mind that, because I have tried to do everything the level best that I could to ensure the smooth running on the class, but it didn't happen. And then after that, when I checked YouTube, their policy and everything, there it is clearly written that the lives are always lagging a little bit. Yes, I am waiting a little bit more so that everyone can come. Okay, don't worry. So I hope you wouldn't mind the lagging thing, and the quality and everything will be clear. And also I am recording the class, so the better quality version of it will be immediately uploaded after the class. Don't worry about it. Okay. I am also creating one more tool for you, which I'm telling you that it can change your option selling them, specifically the directional option selling that we do. Actually, we can actually sell from the zone to zone itself, and I hope we can make it really better really soon, because I want to give it to you really fast.
Right. Um, okay, so the stream is now having 24 viewers. Okay, let's begin now then. Okay, let's begin now. So I will start with the alert first. Then after that I'll move on to the index. As we have too many agendas today, so let's move on step by step. First, let me show you how the alert works. So these are the alerts. These are the alerts. Now these alerts are there will two different alerts will come. One is quick swing, as you can see, that is quick swing, and one is intraday alert. We are also working on one more intraday alert concept. We will soon make it live as well. So this intraday alert and quick swing, let me discuss the quick swing first, because it is much more easier to understand. Understand one thing, this quick swing was created to give you the fastest possible 5% in swing trading. And if you enter properly with this, you will easily achieve that. Let me show you how. First, what you need to do is you need to go to the indicator section, go to invite only scripts and add the humble light. Give it some time, it will come to the chart. By default, the intraday view will be selected, but you need to change it to the, I already sent the channel link, the alert channel link in the private classes group. Okay. In the private classes look. Now, as you can see, it looks little bit messy, little bit different. We will change it. What we need to do is we need to go custom, and we don't need anything else. We just need the swings. That's all we need. Done. Now we will use the time frame of 1 day. The chart will look something like this. Now what we will do is we will go to the alert, and let's say the alert came at 320. Your job will be 3:20 को at 3:15 or 3:20 or from 3, whichever stock comes. If you are a risk taker, then you can blindly buy these. Immediately buy these, all of them. After 3, whatever stock comes, you can blindly buy it if you are a risk taker. If you are a conservative trader who likes his safety first, then what you need to do is you need to wait for the day to close, and your entry process will be something like this. Let's say the scanner gave Kolte Patil. Just a minute. At the end of the day, you can see it is still showing the buy alert. When you put your cursor on it, it will show you the best buy range and also the stop loss. Remember, this stop loss is actually a logical stop loss. In our earlier version, the stop loss was not that best. Right now, this stop loss is the logical stop loss, so you can rely on it. So your stop loss is 384. What we will do is we will place our alert above the high, above the day high, like I have placed the alert here. You can easily place the alert, just bring your cursor like this, click on plus and add alert. In TradingView free version, you can easily add 5 alerts. They will give you for free. So whenever in the next day, the day high is crossed, you buy 50% quantity here. Got it? You buy 50% quantity here. 1 minute. Yeah. So whenever the day high is crossed, you buy 50% quantity here. Why 50%? Because sometimes, or most often actually, the price will close the day high and it will retrace a bit, which is actually good. When it retests near the possible buy range, which this arrow will give it to you, at that area you add 50% more, and your SL will be 384 or whatever the SL it has given. And majority of the time, you will easily see 5% in a single day and 10% within 2 to 3 days. To increase the safety of the stocks, you can buy 2 to 3 or 4 or more different stocks to increase the safety. Increase the safety means we are ordering the basket, the whole basket.
we are buying all the stocks that the scanner is giving to us every single day after 3 or whatever, you know. As I said, there will be two different ways of entry. Either you can buy whatever stock is coming after 3, or you wait for the next day, whenever the high is broken, you buy. That's it. The concept is clear? Whoever understood, please write it in the chat room so that I can see. Or if you have any questions, you can ask regarding this. It is purely based on high momentum. It is capturing the bestest possible momentum for you. That is its purpose. It is not fundamental based, it is completely technical based. And also, if you want to write it in the chat room, then you need to subscribe the channel for 1 minute. It is the YouTube policy, you know, that's why. Great, great. No, you won't get exit alert. It will be completely up to you. Yes, it will be delivery based. It is completely for delivery, cash market. Great, everyone. One alert is created. One thing is clear. Yes, it is inbuilt. The quick swing is inbuilt. If you don't have it in your trading view, then just remove the humble light from your chart, and now go to indicator section and re-add that. Re-add the humble light. Your tool will be updated. Every time I update the tool, you can update it like that. Remove and re-add. Don't worry, if you have joined right now, the whole class recording will be given to you. Don't worry about it. You have not missed anything. एक बार हिंदी में भी रिव्यू कर देता हूँ. हमारे पास जो अलर्ट आएगा यहाँ पे दो तरह के अलर्ट मिलते हैं. एक होता है स्विंग, एक होता है इंट्राडे. स्विंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्केट क्लोज होने का इंतज़ार करेंगे. अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर 3 बजे के बाद जो भी मिलेगा हमें, हम बाई करेंगे. जैसे यहाँ पे 3 बजे के बाद हमारे पास एक स्टॉक आया जो कि कोलते पाटिल, इसको हम लोग डायरेक्टली बाई करेंगे. ठीक है, 3:15 को आया. यूजुअली टारगेट 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा. देखिए टारगेट क्या होगा, वो एक मोमेंटम पे है, कंप्लीटली मोमेंटम पे है. अब इसका टारगेट हम लोग नहीं फिक्स कर सकते, मोमेंटम में जितना देगा उतना. ठीक है, अब नियरेस्ट जो भी जोन होगा वहाँ पे हम लोग टारगेट लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो. अब जो अगर आप एग्रेसिव हो, जैसे मैंने कहा 3 बजे के बाद जो भी स्टॉक आपको मिलेगा, जैसे 3:15 को कोलते पाटिल आया, ख़त्म करो, इसको बाई कर लो. और अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हो, आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे बाई करोगे जब उसका हाई क्रॉस हो जाएगा. क्योंकि ब्रेकआउट तब सस्टेन होता है जब हाई क्रॉस होता है. मैंने क्यों कहा कि अगर आप नेक्स्ट डे बाई करना है आपको, हमने क्या स्टॉक बाई किया था प्रीवियस डे, ये जो मैंने 2 स्टॉक मैंने बाई किया था, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको क्यों मैंने कहा कि वेट करना है. ये देखिए, हमने गैलेंट बाई किया था. इनमें ना एक पैटर्न होता है. 1 मिनट, ये देखिए हमने गैलेंट को बाई किया था ना प्रीवियस डे, काफ़ी अच्छा मूवमेंट करके गया था. इसमें ना एक पैटर्न होता है. ये देखिए, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर बाई करना था जब हाई क्रॉस हो जाए तो यहाँ पे आपको 2 दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया, जो कि अराउंड 8% और समथिंग गैलेंट, राइट. 2 दिन में अच्छा मूवमेंट मिला. लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आता है. मैंने क्या किया था, मैंने इसी दिन ही एंटर किया था, मुझे ज़्यादा मिला. मैंने क्यों एंटर किया था मैं आपको बताता हूँ. इनमें एक पैटर्न होता है, अगर आप उसको पकड़ लो ना तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको. देखिए 15 मिनट के चार्ट में जाइए, और ये जो ओरिजिन उसका हुआ था दिखाता हूँ मैं आपको. यह फॉर्मेशन नोट कीजिए. जिस दिन स्टॉक को भागना होगा ना, स्पेशली ऐसे कैश वाले स्टॉक,
ऐसे कैश वाले स्टॉक, उस दिन ये फॉर्मेशन क्रिएट होगा, उसके बाद भागेगा वो बना के। लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मेशन क्रिएट करके तो भागेगा, हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कहीं भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको अलर्ट तो पहले से दे रहा है पूरे दिन भर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी हेवी सेलिंग भी आ सकता है सेम डे, और वो अलर्ट सस्टेन भी नहीं करेगा क्योंकि पूरा पैरामीटर कंप्लीट नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला चल गया नो डाउट, लेकिन ये वाला नहीं चला, टेक्स इन्फ्रा, जिसमें मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ। इसको मैंने कहाँ पे बाई किया होगा, देख रहे हैं ना, ये जो ब्रेकआउट आया हमने बाई कर ली, लेकिन उसी दिन सेलिंग आ गया। इसीलिए कहा कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो दिन के क्लोजिंग होने का इंतज़ार करो या फिर 3 बजे का इंतज़ार करो, नेक्स्ट डे आप बाई करो, ठीक है। क्योंकि दिन के स्टार्टिंग में तो ये आपको सिग्नल दिखा देगा जब ये पैरामीटर कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये सिग्नल जो था यहाँ पे बना हुआ था सेम डे, लेकिन क्या हुआ, जब पैरामीटर कंप्लीट नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे ये सिग्नल चला गया। इसीलिए जो सेफ ट्रेडर होंगे वो स्ट्रिक्टली बने रहें कि सिग्नल कंप्लीट हो, नेक्स्ट डे बाई करना है। सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों में? ज़रा चैट रूम में लिख के बता देना आप। ओके बता दीजिए थोड़ा सा चैट रूम में। ओके वेरी गुड। अच्छा अब समझ में आया यूट्यूब में क्या झोल चल रहा है। देखिए मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लैग हो रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हो उस चीज़ को 10 सेकंड के बाद, ऑलमोस्ट 10 सेकंड के बाद आपको बिल्कुल भी लैग फील ही नहीं होगा। लैग मुझे फील हो रहा है। अच्छा अब समझ में आया ये चीज़, तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको। मुझे अगर मैं बैठा रहूँ तो फिर आपको लग लगेगा कि यार 10 सेकंड तक क्या हो रहा है, चुपचाप से बैठे। ओके वेरी गुड। अलर्ट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सम टेक्निकल पैरामीटर्स विच आई विल नॉट डिस्क्लोज। When the technical parameters matches, the alert will be generated and it will be live so that you can easily see it. You don't have to search for anything else. Yes, I think the comments are lagging. Yes, that thing is happening. Okay, so let's move on to intraday, right? चलिए इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। To use this strategy for intraday, we will use 15 minutes of time frame, 15 minutes time frame, and this is based on breakout and breakdown failure. Breakout and breakdown failure. Let me show you how. Yes, one more thing I missed. Sometimes in FNO stock, you will see the alert will be generated. Yes, this is only for buy side. Sometimes in FNO stock the alerts will be generated like Colpal. It's actually very rare to generate signal in FNO stock, but whenever it happens, there is a very 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 high chance, I can say, the next day it will move. Whenever the high is crossed, it will move like crazy. It's very rare, but the next day you can be very sure that next day a movement will come. It will be rare. Anyway, now let's move on to the 15-minute chart for intraday. Let's go. In intraday also you will get this type of alert, the 7BO Barger Pen, the 7BO Bharat Forge, something like that. So what does this 7BO means? Let me show you what. Let's say the marine. Okay, so you were asking about the marine, right? Let me check. Marine electrical. If the signal is there, if the signal is still there, then we can easily enter, you know. Yes, the signal is there. We can enter, but the high wasn't broken. So how can we rely on it? Do you understand? So we can buy 30% quantity if we want to at this place. That can happen.
and the next quantity we can add when the high is broken. That can happen, definitely. And maintain the same stop loss that the arrow will give. The stop loss is on daily closing basis. Usually within 2 to 3 days time you will get your target. A minimum 10% of the target can be achieved within 2 to 3 days. And your success will be much more better if you buy it as a basket, like you buy 4 to 5 momentum stocks together. Because some stocks might lag and some might move really fast. That's why. Now let's go to 15 minutes. Basically what we are trying to find is, we are trying to find, let's say, intraday Balkrishna. Okay. We are trying to find a stock that is actually consolidating for the whole day. This is the first 15 minutes candle high. This is the first 15 minutes candle low. As you can see, our parameter is within the first 15 minutes candle, 7 candles should stay. 7 candles should not break high or low. Whenever it breaks the high or low, the alert is generated. But the problem is, majority of the time, this is a very popular strategy, to be honest. This strategy is called NR7, narrow range 7, and many traders follow it, and that is exactly why it doesn't really work. If you directly sell on the breakdown, majority of the time it will not work. It will hit your stop loss and go back up. Do you understand? And that is exactly what we want to capture. So what we are doing is, we are using Humble Light. We are using intraday mode. Let me show you. Just let it come on the chart. Okay, let me add the border so that everything is. Understand this strategy very carefully, okay? Understand the strategy very carefully. Now we have the border, we can easily see the zone. Now as you can see, the price has broken the demand, but it didn't reach the target zone. If we sell this thing at here, if we keep our stop loss here, it will easily be hit, and it happens majority of the time. And that is exactly why we will not buy or sell like this. This stock will be in our watch list for reversal. If it's broken down, then wait for it to come to the target zone. We will look for buying opportunity there. We will look for buying opportunity there. Or if it doesn't touch the target zone today, then that is actually Sone Pe Suhaga. Why? Because we mark this area for tomorrow. When the price comes and hits tomorrow, only for tomorrow, only for the next day. When the price comes and hits here, it creates any kind of reversal formation, we buy. Majority of the time the stock will come and move. Understood? That is one parameter. When the stock gives a sell like this, we don't sell, we wait. We wait for it to come to the target zone and we wait for it to move back up. If it doesn't come to the target zone on the same day, we mark the area, we place the alert. Whenever the stock comes, tomorrow we buy. SL below, definitely. That day's target zone is our SL. I will show you more example of this in live market, don't worry about it. But is the strategy clear to you? This is one parameter. Let me mark the history, let me turn on the history and I'll show you. Let's move on to the yesterday stock. Let's say whatever stock that is, the Naukri, Bharat Forge, many stocks were there. Bajaj Auto, Jindal Steel, Axis Bank. So कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं, पहले से देखते हैं. एक्सिस बैंक था. अब देखो ये एक्सिस बैंक वाला सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. Now the Axis Bank. Wait a minute. Can you see? This was the previous day Axis Bank. The 7 candle breakdown. It happened below the target zone. That's very important. Because this is our second and final parameter. If we want to rely on the strategy for breakout and breakdown, then it needs to happen
above the target zone or below the target zone. Otherwise, we cannot rely on it. If the breakout or breakdown is happening anywhere inside this, we cannot rely on it. It needs to happen either here or here. Okay? आइदर इसके ऊपर होना चाहिए या इसके नीचे होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस पर फुल्ली रिलाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. अगर बीच में कहीं पे हो रहा है तो फिर वेट करेंगे टारगेट जोन के लिए, वहाँ से बाउंस आ सकता है, ये सोच के. द अलर्ट्स विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द अलर्ट इज हिटेड, व्हेनेवर द प्राइस इज हिटेड. We are scanning the market, the alert, the bot will scan the market every 3 minutes for the signal. So it might be a little bit late, like 1 minute late, but it's almost on time every time. Okay. तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए क्या पैरामीटर है मैंने बता दिया, और रिवर्सल के लिए क्या पैरामीटर है मैंने बता दिया. अब एग्जांपल देखते हैं. सो लेट्स गो टू बजाज ऑटो. This is what we are seeing is on the previous day alerts. As you can see, the Bajaj Auto, it hit the target zone at the same day and it moved up, and for the next day also it moved up. और एक चीज़ देखते हैं, बार्जर पेंट. हर एक अलर्ट को चेक करेंगे. Remember, all the popular strategy, they usually fail, and that is what we are trying to take advantage of. As you can see, the Barger paint, it didn't active actually. It did active in the middle. It didn't come to the target zone. On the next day itself, it didn't come to the target zone. So we can avoid this. Look, this is only for buy side, okay, not for sell side. Sell side के लिए हम लोग कुछ बना नहीं पाए सही से. भारत फोर्ज, we are actually trying to do it. एंड जब भी बन जाएगा मैं बता दूंगा, आप सबको दे दूंगा, डोंट वरी. चलिए भारत फोर्ज में क्या हुआ देखते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन बना हुआ था, लेकिन व्हाट हैपेंड द सेम डे, इट डिडंट कम टू द टारगेट जोन. सो दिस इज़ नॉट वैलिड, हम लोग रिवर्सल नहीं ले सकते. और नेक्स्ट डे ऑल्सो इट डिडंट कम टू द टारगेट जोन, सो वी मिस्ड इट. डोंट वरी, मिस्ड इट तो मिस्ड इट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिंदल स्टील देख लेते हैं. Don't worry who have joined late, don't worry about it. All the recording will be given and you didn't miss anything. तरीका आसान है, बिल्कुल भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे. ये देखिए, this one is the best. As you can see, the same day the alert was generated when it was broken, but it didn't come to the target zone. So what did we do? We marked the target zone area, the top area, the bottom area. The price came, it hit the same day target zone, previous day target zone as well, and the price moved up. Our SL will be below the target zone with a little bit of buffer below the target zone, and it moved up. That's what I want to capture. That is the exactly same thing that I want to capture. अगर यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह आपको मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है ना, बढ़िया होता है. जिंदल स्टील देख लेते हैं. अच्छा, जिंदल स्टील देखा हमने. टीवीएस मोटर, yes. No, it almost came to the target zone. Yes, you can take some risk, that can happen, but क्यों बेकार में रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पे आप एफएनओ स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, शायद लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हो. लेवरेज पे अगर ट्रेड करोगे ना तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी हमारे लिए ना. बेकार में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता. एक आधा बार शायद काम कर जाए, लेकिन क्या होगा, आपके अंदर एक बैड हैबिट क्रिएट कर देगा ज़्यादा रिस्क लेने का, तो प्रॉब्लम है. रिमेंबर, दिस स्ट्रैटेजी इज टू बी अप्लाइड ओनली विद द स्कैनर स्टॉक, नॉट द अदर. द स्कैनर स्टॉक, why do they work on this strategy? There is a reason for it. Think about it.
Why are they reacting like this? They are behaving like this because they are in a sideways momentum. They are in a sideways phase. When the momentum is too high, the price will easily break the target zone. That is dangerous for everybody. But when the momentum is low, they react a lot on the target zone. Okay? दैट इज़ एग्जैक्टली वही. हमें साइडवे स्टॉक चाहिए, ना कि मोमेंटम वाला. अब देखिए यहाँ पे ये आया, द सेम डे इट केम, इट बाउंस्ड बैक अप ऑन द नेक्स्ट डे एज वेल. बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न बनने में, ये जो रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, यहाँ पे आप अगर एंटर करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल की बात है ना, क्योंकि आपका मार्केट तभी ख़त्म होने वाला है. प्रॉब्लम वहीं पे है. ऑल्दो नेक्स्ट डे गैप अप भी खुला, सब कुछ ठीक है, एसएल भी अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि एसएल रहेगा सेम डे, मतलब जब भी मार्केट खोलेगा नेक्स्ट डे जोन के नीचे. अच्छा, डी एस जेड मतलब डेली सप्लाई जोन, डी जेड मतलब डेली डिमांड जोन, डी टी जेड मतलब डेली टारगेट जोन. ओके, हमें बाई और सेल कैसे करना है वही तो बता रहा हूँ आप लोगों को. आपको क्या करना है, दो तरह से बाई एंड सेल करना है. अगर ये फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिख जाए कहीं पे ऐसी जगह पे, और ये ब्रेक डाउन हो रहा है जोन के नीचे या ब्रेकआउट हो रहा है जोन के ऊपर, टारगेट जोन के ऊपर, तो हम बाई और सेल कर सकते हैं इंट्राडे में ही. अगर ये बीच में कहीं पे हो रहा है तो फिर हम इंतज़ार करेंगे टारगेट जोन में रिवर्सल फॉर्मेशन बनने के लिए और उसको होल्ड कर जाएंगे इंट्राडे में, या पोजिशनल एक दिन के लिए कैरी कर सकते हैं. बेटर है कि इंट्राडे में स्क्वायर अप कर दें. सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि जब सेम डे ये फॉर्मेशन बन रहा है और ब्रेकडाउन वगैरह बन रहा है, ब्रेकआउट बन रहा है, लेकिन टारगेट जोन पे नहीं आ रहा, सेम डे टारगेट जोन पे नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट डे हमारे लिए बेस्ट बाइंग एंट्री बन सकता है. ये है सबसे बेस्ट सिनेरियो. रिस्क रिवॉर्ड विल बी इजीली मिनिमम 1:2 इजीली. लेट्स सी सेल. वन मिनट लोड होने देते हैं. ओके, तो सेल में सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे टारगेट जोन पे आया नहीं, नेक्स्ट डे भी टारगेट जोन पे नहीं आया, सो वी कैन अवॉइड दिस. अब जनरल स्टील, एक्सिस बैंक हो गया, नौकरी. नौकरी में भी शायद आया नहीं, देख के जो लग रहा है. नहीं, नौकरी में भी नहीं आया. देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन उस दिन टारगेट जोन में नहीं आया, नेक्स्ट डे भी टारगेट जोन में नहीं आया, तो इसको इग्नोर करेंगे. यस, द टारगेट जोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द एंट्री फॉर दैट सेम डे और द नेक्स्ट डे. अच्छा, द एग्जिट विल बी वेरी सिंपल ना. एग्जिट विल बी, let me show you an example. Let's suppose the price, this is your target zone and this is the next day's target zone. So the price comes here and the price, your SL will be somewhere around this. Target will be nearest daily demand zone below or the sell line. These two are your logical targets. बजाज ऑटो, जिंदल स्टील, इनको तो देख लिया ऑलरेडी. DCM, अच्छा ये तो स्विंग वाले हैं. PVR Inox, the alert link I will share one more time, don't worry about it. Okay, don't worry. Okay, what happened here is it has given the breakout. Majority of the time it actually fails, as I said. सो डोंट रिलाई ऑन द ब्रेकआउट. हमें क्या करना है, हमें इस टारगेट जोन से मतलब है और ये वाले टारगेट जोन से मतलब है. अब नेक्स्ट डे दिस टारगेट जोन वॉज हियर एंड दिस टारगेट जोन वॉज हियर, सो द प्राइस केम टू द टारगेट जोन. वॉट एवर टारगेट जोन वॉज नियर बाई, इट हिटेड एंड इट वेंट बैक अप. एंड मेजॉरिटी ऑफ द डे, ऑल्दो इट डिडंट रीच आवर टारगेट ऑफ दिस एरिया, दिस विल बी आवर टारगेट, फर्स्ट टारगेट, this will be our second target, the sell line. This will be our second target, the sell line.
It didn't come for like 1 rupee maybe, and throughout the day it was in profit. You can do option selling as well. अगर एक्सपायरी के नियर हो तो ऑप्शन सेलिंग में आपको काफ़ी अच्छा पैसा वहाँ पे मिल जाएगा. डेफिनेटली आपको लिक्विडिटी भी चाहिए होगा, तो देख के. टीवीएस मोटर हमने देख लिया है. अल्केम पेट्रोनेट, अच्छा और क्या था, अल्केम पेट्रोनेट. यस, वी कैन टेक द एंट्री इफ इट क्रॉसेस द टारगेट जोन. ये वाला तगड़ा वाला था, ये सही था. देखा ना आपने, इसी के बारे में बात कर रहा था. देखिए सेम डे यहाँ पे हिट नहीं होता है, कुछ इस एरिया पे आपका मार्किंग रहेगा. सेम एरिया पे डेली टारगेट जोन बना हुआ है, सेम एरिया. आपका अलर्ट पहले से प्लेस्ड है, रिवर्सल एरिया, रिवर्सल कैंडलस्टिक बन गया है, डन. आपका जो टारगेट होता है, ये होता है पहला टारगेट, ये होता है सेकंड टारगेट. हो गया. मैं इसी के बारे में बात कर रहा था. आपको मिलेगा कम लेकिन मिलेगा अच्छा. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा. और क्योंकि आप अलर्ट बेस में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपका अलर्ट ऐसे प्लेस होगा. काम खत्म. अलर्ट आपका प्लेस हो गया. अलर्ट जब प्लेस हो गया, प्राइस यहाँ पे आया तो आपको अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तब आप देखो कि क्या बन रहा है, क्या करें. तो आपको पूरा दिन देखते नहीं रहना है. डेफिनेटली एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ अ ड्रॉडाउन, एंड दिस स्ट्रैटेजी टू विल हैव ड्रॉडाउन. That is true. But if you maintain the risk reward, then always everything is about risk and reward. No, if the price comes to the target zone on the same day, then the next day it will not be required for the price to come to the target zone. Next day ये valid नहीं होगा. मैं क्या बता रहा हूँ कि प्राइस अगर सेम डे टारगेट जोन में आ गया, तो फिर नेक्स्ट डे वाला टारगेट जोन व्यू हमारा इनवैलिड हो जाएगा ना. ये टारगेट जोन इंटैक्ट रहना चाहिए. यस, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक इनसाइड बार, एनगल्फिंग, the zero doji, every setup that we have taught. Or maybe you can look for the RSI oversold like this. As you can see, the RSI was oversold in this. This can also be a confirmation. The RSI oversold with daily target zone. Remember, this strategy will not work on every day in every stock. This is only for the alert stocks. If it doesn't come, then we can look for the next day. अच्छा, ये अल्केम गया, पेट्रोनेट और SBI लाइव देख लेते हैं. ओके, चलिए. पेट्रोनेट में क्या मजाक हो रहा है. No, next, almost every time both the target zone will be at the same area. Almost every time both the target zone will be at the same area, and whichever target zone the price comes, that is your entry. Okay, whichever target zone comes, previous day also come, previous day can also come, the same day also come. कोई भी टारगेट जोन काम करेगा. ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है टारगेट जोन. सबसे बढ़िया टारगेट जोन क्या होता है, जब ये दोनों सेम रहते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, सेम एरिया है, सेम एरिया, ये बेस्ट होता है. बहुत ज़्यादा ऊपर नीच हो गया तो फिर प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आपका एसएल एंट्री वैलिड है, लेकिन एसएल आपका वाइड हो जाएगा ना ऐसे, तो वहीं पे प्रॉब्लम है और कहीं पे नहीं. जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये वाला अगर मार्क करें तो, एक मिनट, ये वाला देखिए, ये ऑलमोस्ट आके हिट होता है. मतलब यार 1-2 पैसे के लिए शायद हिट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया था, है ना. तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काम करता है. ऑप्शन सेलिंग करोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा, सच में कमाल होगा. और एक स्टॉक बाकी है, दैट इज़ SBI लाइव. डेफिनेटली यार लाइव ट्रेडिंग सेशन तो होगा ही. थोड़ा सा आप रुक जाओ. कंप्यूटर में जान नहीं था पहले, अभी जान आ चुका है. उन्हीं चीज़ों पे ही काम कर रहा था मैं. यस, इफ़ दे आर नॉट ऑलमोस्ट सिमिलर, देन यू कैन बेटर अवॉइड.
क्योंकि पैसा आपका है, हर एक सिनेरियो परफेक्ट होगा तभी जाके हम लोग कुछ करेंगे उसमें। हाँ डेफिनेटली वी कैन कैरी, डेफिनेटली वी कैन कैरी। लेकिन और एक चीज़ है कि आप हेज के साथ कैरी करो, ठीक है, हेजिंग के साथ कैरी करो। एक कॉल बेच दो आप, जैसे देखो यहाँ पे परफेक्ट था, ब्रेकडाउन फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी है। यहाँ पे इसका टारगेट जोन था, नेक्स्ट डे टारगेट जोन यहाँ पे था, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। एंट्री तो वैलिड है, एंट्री इज़ वैलिड, बट द एसएल इज़ बिलो दिस एरिया, एसएल इज़ बिलो दिस एरिया, दैट इज़ एग्जैक्टली वाई दिस इज़ ए प्रॉब्लम, दिस इज़ ए प्रॉब्लम, राइट? Because the SL is big, although it did give you a target, the strategy worked, but the SL was bigger. That is the problem. So you need to deal with that, and I hope this will be my last example because I don't have any more stock on the screener. So now here comes the most important part. The hedging strategy, I don't usually do the hedging, but I will try to share some in the later part. Now मैं क्या बोल रहा था, हाँ, one thing is very important, understand something, it is your money, you need to take care of it. Every strategy will have a drawback. You can get 10 successful trades in a row, you can have 10 failed trades in a row, but that doesn't mean the strategy is bad. It does mean the statistics is working as a statistics. I mean, आप समझ रहे हो ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको बता रहा है कि एक स्ट्रैटेजी 10 सक्सेसफुल ट्रेड भी दे सकता है लगातार, 10 फेल ट्रेड्स भी दे सकता है लगातार। यहाँ पे हमारा काम बनता है कि कैसे हम इसको मैनेज करें, स्टॉक को कैसे मैनेज करें, पोजीशन को कैसे मैनेज करें। इसीलिए आई विल टेल यू टू पेपर ट्रेड ऑन। पेपर ट्रेड मीन नॉर्मल पेपर ट्रेडिंग नहीं, यूज द क्वांटिटी, बाई 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटीज विद स्मॉल स्टॉप लॉस। Use only 10,000 rupees capital or 15,000 rupees capital, max to max. Do not buy options on it. While you are in learning phase, do not buy options on it. Do not buy futures on it. Use with cash margin. You can take 2x, 3x leverage if you want to on intraday. That can also work. But do not take huge risk. That's what I want you to say. Want to say. अगर आप ऐसा करोगे, 100 ट्रेड का एक्सपीरियंस चाहिए यार आपको, है ना? You need to take 100 trades on your own analysis. That's the main and that's the important thing. This is what I need from you. Okay? If you do that, then majority of the time you will make money. And I am always trying to make your job easier by providing you the scanners and all the updates. Even one more update is on the horizon. We are already working on it for the very first momentum on intraday even. So if it's done, when it's done, I will also add that as well. And everything is free. Just what I need from you is to manage your risk. I cannot do it for you. Only you can do that. I know it's sounding very boring, and it is very boring. But please listen to me. Once the money is gone, it's gone forever. And the SL, as I said, the SL can't be current day's target zone. Yes, the SL can be at current day's target zone. That can happen. छोटा सा SL लेके हम लोग देख सकते हैं. डिपेंड करेगा ना उस दिन का कैसा क्या रहेगा. हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे SL रख सकते हैं, टच बेसिस पे नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं, है ना? चलेगा? नहीं, इंडेक्स में अलर्ट कुछ नहीं होगा क्या, क्योंकि इंडेक्स पे हम लोग कुछ ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं उसको. इंडेक्स में हम लोग कुछ भी ऑटोमेट नहीं कर रहे. इज दिस सेकेंड टाइम एंट्री इन SBI? क्यों सेकेंड टाइम कहाँ पे? Yeah, there were two chances. Like in this area, it was inside bar and the high was broken. The high was broken, but the problem is, think about it. If you enter here, what is your logical target? Your logical target is this area, है ना? Logical target is this area. लेकिन यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो फिर क्या होगा? छोटा सा ही टारगेट आपका मिलेगा, तो फिर आपको रिटेस्ट के लिए रुकना पड़ेगा. दिस एंट्री वुड हैव बीन मच बेटर बिकॉज दिस इज ए वेरी स्मॉल इनसाइड बार एंड
पोटेंशियल टारगेट इज बिगर, दैट वे। अच्छा नहीं, यहाँ पे SBI में डबल एंट्री नहीं है, दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट वैलिड नहीं है। द प्राइस शुड बी इनसाइड फर्स्ट 15 मिनट्स, 7 कैंडल्स शुड बी इनसाइड द फर्स्ट 15 मिनट्स, सो दैट इज एग्जैक्टली वाई अदर डेज आर नॉट वैलिड। ओके, एंड या राइट, आप इसके बारे में बात करें, समझ में आया। हाँ, नो, दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर द नेक्स्ट डे। Why it is not valid for the next day? Because it is trading at the target zone. Our whole game is based on target zone, है ना, ये ट्रेड ही कर रहा है टारगेट जोन पे, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे एंट्री नहीं बनेगा, प्राइस तो ऑलरेडी पहुँच चुका है टारगेट जोन। चलिए, अब ये ख़त्म हुआ, अब हम लोग इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको स्टॉक वाला मामला ख़त्म हुआ, समझ में आया, और स्विंग वाला चीज़ समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइए मुझे, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे इंडेक्स पे। स्विंग स्ट्रैटेजी मैंने अभी अपडेट किया, आपको रिकॉर्डिंग उसका मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो फिर मैं हूँ। ग्रेट, एवरीवन अंडरस्टूड। एक बार सबका रिप्लाई देख लें, ओके, उसके बाद करेंगे ना। ब्रेक डाउन एग्जाम्पल, देखिए जो एग्जाम्पल हमें मिल रहा है उसी पे ही काम कर रहा हूँ मैं। अभी जितना अलर्ट था सबको डिस्कस कर दिया, अभी और कोई अलर्ट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आएगा उसको डिस्कस करूँगा डेफिनेटली। ओके, ग्रेट। स्टार्टिंग में जो सिखाया हो हिंदी, वो उसको मैंने हिंदी में रिपीट कर दिया है, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, हिंदी में ही उसको रिपीट कर दिया है, डोंट वरी। ओके, चलिए। नाउ इन इंडेक्स we can trade in different types of manners. Now in the first 15 minutes I mostly trade with quick mode. Now you might think that what is quick mode and what is slow mode. Market dynamics change really fast in recent time. That is exactly why sometimes the market is in a tight range and sometimes the market is in a very wide range. When the market is in a tight range, most people lose their money because of the हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो गया। ओके, क्या बता रहा था यार, अब मैं कमेंट्स को नहीं देखूंगा, अब मैं पहले इसको ख़त्म करूंगा उसके बाद कमेंट्स देखूंगा, वरना भूल जाता हूँ मैं। ओके, okay, now when the market is sideways, many people lose their money because of the wrong option buying at the wrong place, because of the decay. We wanted to capture the sideways movement dot to dot. That is exactly why we created the quick mode. On the sideways days, quick mode works really good. On the momentum days, slow mode really works good. But the problem is how to identify the day is sideways or not. That's a very difficult job to do, almost impossible. That is exactly why I rely on the quick mode more on the option buying front for the first 15 minutes, because whatever the matter is, the quick mode will work on the first 15 minutes. Let me show you how. Okay, in this scenario, to make you understand, what I'll do is I will open two charts simultaneously. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी, स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों को साथ में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी स्पॉट लगा लिया, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें what we need to do is we need to use 3 minutes time frame. For the first 15 minutes to 30 minutes max, we will use only 3 minutes time frame. इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए, वरना मिस कर जाएंगे आप सब कुछ।
This strategy will work only for next 30 minutes after opening. Next 30 minutes after opening. Understand this. This cannot be used after 30 minutes. It will be too much risky. Now understand this. What was happening on that day? यहाँ पे क्या हुआ? Both Nifty and future, they came to the target zone together and created a rejection candle. Rejection candle is basically with a long wick. Body का color चाहे कुछ भी हो, whatever the color might be, the wick should be long. Why the wick should be long? Because the sellers were pushing hard and the buyers were pushing much more harder. They destroyed the seller, almost decimated them, and created this long wick. That means the buyers are strong. Got it? So it created a zero doji as well. And our entry will be when the high breaks, and our target will be nearest sell line. So we entered here, we booked here, got out, काम खत्म. Fast entry, fast execution. Our entry will be at the target zone, not anywhere else. At the target zone. Majority of the time you will see whenever the price breaks the quick mode demand, it comes to the target zone. But the target is too small to trade. That's the main problem. That is exactly why we will wait for the target zone to come and we will plan our trades there. But remember, if both the chart comes together, then that is good. Otherwise, it will be problematic for us. And this will be valid only for the first 15 minutes. Sorry, first 30 minutes. Not more than that. This is the exactly same strategy that I personally use almost every single day. And that is exactly why it moves really fast. Because the morning momentum is there. है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? Although I told you that I trade only the target zones, but sometimes what happens, these opportunities are really ripe. Can you see? This is perfect hammer. Perfect hammer, how the perfect hammer looks. This is your wick, this is your body. Without any wick. That is perfect hammer. That is perfect inverted hammer. And इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, सेम चीज़ ये होता है हैमर. यहाँ पे वीक नहीं होना चाहिए अपर साइड, ये होता है परफेक्ट हैमर. दीज टू हैमर्स वी नीड एट हियर और हियर वेयर एवर. इतना समझ लीजिए, मॉर्निंग में क्विक मोड इतना फास्ट वर्क करेगा, आपको आप मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे, इतना अच्छा वर्क करेगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है सही टाइम पे पकड़ लेना उसको, क्योंकि यहाँ पे ना आपका बहुत साहस लगेगा. क्या बोलते हैं साहस को? हिम्मत लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम इतना फास्ट होता है. आपको एसएल लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा कि मैंने एंट्री कर ली, इसके ऊपर चला जाए तो मैं निकल जाऊंगा, नो मैटर व्हाट द एसएल इज़, व्हाट द पोजीशन इज़, आई एग्जिट. तो ये होना चाहिए. तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये एंट्री लिया हुआ था, है ना. और ये मैंने वहाँ पे अपडेट भी किया हुआ था, ये एक्सपायरी का दिन था शायद, वहाँ पे मैंने चार्ट अपडेट भी किया हुआ था, आपको बताया हुआ था. और उसके बाद वो काफ़ी अच्छा गिरा. हाँ वही होना चाहिए, बात वही है. तो आपको समझ में आ रहा है ना, स्ट्रैटेजी धीरे धीरे समझ में आ रहा है. तो मैंने इसलिए कहा था क्विक मोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. आप लोग मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, आप लोगों को जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा. कोई बता रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, यहाँ पे ये कर रहे हो, वहाँ पे वो कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं समझता हूँ यार, कॉम्प्लेक्स है, अब क्या करें, सब कुछ आसान थोड़ी ना होगा. कॉम्प्लेक्स है इसीलिए तो लास्ट में सिखा रहा हूँ ना. ये देखिए, द प्राइस रिएक्टेड फ्रॉम द डिमांड जोन, द प्राइस रिएक्टेड फ्रॉम द डिमांड जोन ऑन द सेम डे and it moved back up, it moved up. And I told you, whenever it closes, both of them closes above the supply area, it moves to target area. But although the first day क्या होता है, यहाँ पे टारगेट एरिया पे हमारा कोई ट्रेड नहीं मिला, हमें बॉटम से ट्रेड करना पड़ा. थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, सारे जोन से आप ट्रेड करना सीख जाएंगे क्विक मोड में. इतना समझ लीजिए, फॉर द फर्स्ट 15 to 30 minutes, specifically on the first 15 minutes, any zone wherever you see the reaction, you can take the trade. It will give you the first momentum, but you should be always ready to take the SL as well. And आपका जो SL होगा ना, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा.
You need to look at the both the charts. Both should be similar. Both should be similar. सिर्फ स्पॉट नहीं, सिर्फ फ्यूचर नहीं. ओके, दोनों चार्ट सेम स्टोरी बताने चाहिए. अब देखते हैं. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. आपको मतलब क्या बोले यार, इतना इतना फास्ट आपको मोमेंटम मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते. देखो क्या होता है, प्राइस आता है यहाँ पे, आपका डायरेक्ट एंट्री होता है यहाँ पे डिमांड जोन पे, आपका नियरेस्ट टारगेट, वहीं पे सेल लाइन भी है, तो वो आपका नियरेस्ट टारगेट हो गया. आप पूछोगे सर यहाँ पे तो नहीं आया. मैंने आपको क्या कहा था, जो भी नियरेस्ट सेल लाइन होगा वो आपका टारगेट रहेगा. नहीं, एसएल क्लोजिंग बेसिस पे इंडेक्स में कभी मत रखना सर, वहीं पे ख़त्म हो जाओगे आप. एसएल हमेशा टच बेसिस. जब भी प्राइस इसके नीचे आता है आप एग्जिट करो, कुछ भी सोचना मत. प्राइस आया नीचे, ख़त्म, वहीं से एग्जिट करना है आपको. 3 मिनट कैंडल, यस. और हमेशा हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको इन द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करना है. इन द मनी कैसे सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से द प्राइस ओपनड हियर, दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस व्हिच इज 19,700. टेक 100 रुपीज़ डाउन, 19,600. टेक 100 रुपीज़ डाउन, 19,500. These will be your call options. 19,500, 19,600 will be your call option choice, and 19,800, 19,900 will be your put option choice. Always trade in the money, always, so that you can capture the best momentum. Okay? चलिए और देखते हैं. अगर आप सेफ ट्रेडर होंगे, देखिए मैं तो रिस्क लेता हूँ. मैं क्या करता हूँ, प्राइस आया डायरेक्टली, कुछ भी बने ना बने, आई डोंट केयर, आई इमीडिएटली एंटर. बट अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर यहाँ पे कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन बना नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, आप खुद देखो, यहाँ पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बना नहीं है. देयर इज़ नो रिवर्सल फॉर्मेशन इन दिस, सो दिस इज़ नॉट योर वैलिड एंट्री. But here it has created a reversal formation, but the problem is it is well past 30 minutes. So that is exactly why this is also no entry. तो सेफ ट्रेडर्स क्या होंगे, ऐसे ट्रेड को फिल्टर करेंगे. Yes, that is exactly what I said. जो सेफ ट्रेडर होंगे उनको कुछ और सोचना नहीं है. आप हमेशा रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करो. कुछ ट्रेड आपका मिस हो जाएगा, कुछ आपका मिस नहीं होगा, लेकिन आप बच जाओगे, है ना. जैसे देखो यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है यहाँ पे स्पेशलिटी, क्या है स्पेशलिटी, ये है कि दिस वाज ए रिवर्सल फॉर्मेशन बिकॉज इट वाज ए लॉन्ग वीक कैंडल. दिस वाज ए लॉन्ग वीक कैंडल एंड ए डोजी एंड एवरीथिंग, बट द प्राइस डिडंट रीच द टारगेट जोन हियर. सो बोथ द चार्ट्स आर नॉट कोरिलेटिंग विद ईच अदर. बट एज आई सेड, अगर आप सेफ ट्रेडर होगे आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे. अगर मैं होऊंगा तो मैं एंट्री ले लूँगा, इसके नीचे अपना एसएल रहेगा और टारगेट होगा नियरेस्ट सेल लाइन, बिकॉज बोथ द सेल लाइन्स आर सेम. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए. 10 रुपये का एसएल लग गया ना, लग गया, आई डोंट केयर, 10 रुपये तो है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है. सेफ ट्रेडर्स हमेशा सोचेंगे, इंतज़ार करेंगे, एक्सपीरियंस बिल्डअप करेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे. ठीक है. ऐसे देखो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है, देखिए इसने टारगेट जोन तोड़ दी, ये टारगेट जोन तक आ भी नहीं पाया. तो ये जब टारगेट जोन इसने तोड़ दी तो फिर रिवर्सल फॉर्मेशन का कोई मैटर ही नहीं बनता. यहाँ पे ये टारगेट जोन पे आ नहीं पाया तो रिवर्सल ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता. तो ये अपना नो ट्रेडिंग डे है, यह अपना नो ट्रेडिंग डे है, क्योंकि हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हैं ना टारगेट जोन पे. ये देखो सेम थिंग. यहाँ पे क्या होता है, टारगेट जोन टूट जाता है, यहाँ पे टारगेट जोन में प्राइस आता है, टूट जाता है, यहाँ पे टारगेट जोन में प्राइस आता है, वहाँ से अच्छा खासा स्लो मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब डोजी वगैरह फॉर्म कर रहा है, एनगल्फिंग वगैरह फॉर्म कर रहा है, सब कुछ मतलब यहाँ पे देख के लग रहा है यार चलो ले लो इसको, ले लो ये वाला ट्रेड. क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा एंट्री होता है, अब अपना टारगेट देखिए 1:3 के आसपास हमारा टारगेट होगा, क्योंकि एसएल तो इसके नीचे है ना, इसके नीचे है. इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी some days the quick mode reacts, some day the future reacts more, some day the spots react more, and as you can see today future is reacting much more to the zone rather than the spot.
सो हम लोग फ्यूचर के चार्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो बस वही है, इस तरह से समझना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इसीलिए मैं आपको ये वाला चीज़ लास्ट में दिखा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं समझता हूँ। देखिए सिंपली मैं रिजेक्शन में ले लेता हूँ, मतलब यार सीधी सी बात है, यहाँ पे रिजेक्शन दिख जाते हैं, क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है, जोन पे आ गया, दोनों जोन पे आ गए, चलो ख़त्म करो इसको, ले लो टारगेट जोन तक, मतलब सप्लाई जोन तक। If it closes below the target zone coming for a retest, what is the probability of going up? No, that is very difficult to predict. That is very difficult to predict. In quick mode, in the first 15 minutes, always look for rejection from any zone. This is quick mode. Always look rejection from any zone. Oh, the difference is huge. The spot and the future difference is huge. इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे कमोडिटी के क्लास में कि फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि कमोडिटी में वी विल ट्रेड मोस्टली इन फ्यूचर इन कमोडिटी, वी विल लुक ओनली फॉर फ्यूचर चार्ट्स इन कमोडिटी एंड वी विल डिस्कस फ्यूचर इन डेप्थ इन कमोडिटी। डोंट वरी अबाउट इट। सो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ना, एक ही पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है प्राइस आ रहा है किसी भी जोन में, पहले 15 मिनट स्पेसिफिकली, पहले 15 टू आधा घंटा, 15 मिनट टू आधा घंटा, किसी भी जोन में वो रिजेक्शन बना रहा है। यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन क्लियर मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन है, दोनों सेम फॉर्मेशन में है, तो चलो ख़त्म करो ना उसको। आप देखेंगे सेम स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक वेरी क्विक डिसीजन। आई मीन आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको एसएल भी अगर आएगा ना तो भी इमीडिएट आएगा, झटके में आपका एसएल आ जाएगा, आपको निकलना पड़ेगा, होल्ड नहीं करना है। Definitely definitely you can take the trade on reversal formation basis on the 3-minute bullish engulfing. No, white soldier is too much, because when you wait for the next 3 candles ना, it will reach the target. आपको white soldier का wait भी नहीं करना है, ठीक है, white soldier को wait नहीं करना है, black cross का wait नहीं करना है, कुछ भी wait नहीं करना है। और majority of the time when the price comes here, it will create some kind of long week rejection formation majority of the time, or any kind of bullish engulfing or inside bar, ठीक है। आपका और भी 3 क्लासेस आई थिंक बचे हैं जहाँ पे हम लोग कमोडिटी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अगस्त के लास्ट वीक तक चलेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम वेट करेंगे ना, इफ़ यू वेट फॉर दिस for any kind of confirmation, what will happen is we will miss all this move. That's the problem. But definitely you need a lot of experience to trade these kind of things. ये वाला कौन से टाइम पे था यार, ये जो कैंडल था 936, ओके ये चलेगा ना, ये चलेगा, दिस इज़ गुड, दिस इज़ विद इन फर्स्ट 30 minutes and it is also an inside bar here and this is good, चलेगा ये वाला। Majorly rejection at the target zone level, and when you move on to a better when you have more experience in the later part, you can trade with rejection from any kind of zone, any zone. As I said, you can wait for the rejection. You are a safe trader right now, you will wait for the rejection right now. When the experience build up, you just buy at the zone or sell at the zone, काम खत्म। Yes, both are in 3-minute chart and in quick mode. That's it. कितना आसान है, मतलब दिखता आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में जब एग्जीक्यूट करोगे ना, आपका मतलब इतना डर लगेगा, आपको बता भी नहीं सकता। इस डर से आपको पहले ओवरकम करना पड़ेगा। क्यों डर लगेगा पता है? क्योंकि आप जानते हो कि आपका एसएल बस 10 पॉइंट का है, वो एक झटके में हिट हो सकता है। जैसे दिस इज परफेक्ट, इजंट इट? सी, दिस इज व्हाट आई वांट, परफेक्ट। This came to the target zone, this came to the demand zone. So basically both are at any zones. So that is good. Buy करो, काम खत्म। SL कहाँ पे होगा? SL will be below this. Why am I taking SL below the spot?
Why not below the future? Because future has already broken the zone, so thus this zone has no value. So the Nifty spot chart is reacting more. Nifty future chart is the on that same day is not much reacting. कंफ्यूजन हो रहा है या समझ में आ रहा है? ये बताइए, अभी तक जो मैंने बताया ये समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? ये बताइए ज़रा. अपना अपना जो भी क्वेश्चन वगैरह है बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी पता है. एक बार आपका प्रैक्टिस होगा ना, अगर आप 100 ट्रेड लेंगे ना एवरी डे, एक ट्रेड अगर आप लेंगे, खुद को फोर्स करेंगे, तो फिर इतना आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप ऑटोमेटिकली आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा. प्राइस आया, आपने लिया. ओके, बाकी सब लोग बताइए कि क्या हालत है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. हाँ बिल्कुल, और एग्जांपल देखेंगे ना, टेंशन मत लीजिए. रिजेक्शन मोस्टली लॉन्ग वीक से होता है. रिजेक्शन मोस्टली लॉन्ग वीक से होता है. इन द मनी का और एक एग्जांपल चलिए देख लेते हैं. द मार्केट ओपनड हियर. द मार्केट ओपनड हियर because this is the red candle opening. So market opened here which is around 19,589. इसको राउंड फिगर बना लीजिए. 19,600 इज द राउंड फिगर. तो फिर इसके 100 पॉइंट नीचे, दैट इज 19,500, दैट इज योर कॉल स्ट्राइक प्राइस. ओके, और 19,700 इज योर पुट स्ट्राइक प्राइस. गेट इट? टारगेट जोन पे अगर आप वेट करते हैं एंट्री के लिए, तो फिर आपको बेस्ट है ये वाला मिल जाए या ये वाला लॉन्ग वीक वाला कैंडल मिल जाए. इन दोनों कैंडल को मार्क करिए, इन दोनों कैंडल को ध्यान से समझिए. ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, दीज टू थिंग्स यू नीड. यस, फ्रॉम टुमारो लाइव मार्केट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग विद दिस. आफ्टर 30 मिनट्स तो आपको जोन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट में इन साइड बार या 15 मिनट में इनगल्फिंग, उस तरह का. ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स वहाँ पे आपको 15 मिनट में चेक करना है, या फिर टारगेट जोन अगर हो स्लो वाला तो फिर 5 मिनट में, जैसे मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया उस सेटअप पे चले जाना है. ये वाला सेटअप सिर्फ फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए, क्विक मोड. बेस्ट कैंडल ये दोनों है रिवर्सल के लिए. ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल. उसी में ही सबसे ज़्यादा क्लियर होगा और कहीं पे क्लियर नहीं होगा. लाइव अलर्ट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है सर, आप लोगों को लिंक दे दिया है प्राइवेट ट्रेड चैनल में. लाइव अलर्ट का लिंक दे दिया है. नहीं, हाँ, टिल 9:45 यस. देखिए यहाँ पे कोई भी टारगेट जोन पे आता नहीं है, मैं आपको सिर्फ टारगेट जोन दिखा रहा हूँ अभी. ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आई विल शो यू ओनली द टारगेट जोन ट्रेड्स. यहाँ पे टारगेट जोन पे हो रहा है. देखिए, मोस्टली अंडरस्टैंड वन थिंग, मोस्टली निफ्टी प्रीमियम विल मूव्ड बाय द स्पॉट, नॉट बाय द फ्यूचर. इट विल बी मूव्ड बाय द स्पॉट. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी पुट मोर pressure, we put more of our attention on the spot itself. Anyway, this is a doji, so this is a rejection. Dojis are always good, as I said. Investment scanner is not completed yet, we are still working on it. Now this doji is good, we buy here, our SL will be below the doji,
our target will be nearest demand zone and then our target will be nearest sell line, and it was done. बस यही तो है, और क्या है स्ट्रैटेजी में बताइए। इससे आसान और क्या क्या मैं बोलूँ, मतलब इससे आसान करके क्या बोलूँ। अरे यार, वही तो अब तक बोल रहा, रोज़ आपको क्विक मोड यूज़ करना है पहले 30 मिनट्स पे, किसी दिन स्पेसिफिक नहीं है, किसी दिन स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी दिन, हर एक दिन। ऑब्वियसली डोजी कैन गो आइदर वे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन इट कम्स टू द टारगेट जोन, लोअर टारगेट जोन, इट मूव्स अप, व्हेन इट कम्स टू द अपर टारगेट जोन इट मूव्स डाउन। वी आर एज्यूमिंग दैट एंड वी आर टेकिंग दैट एंट्री। हमें एंटर, मतलब डोजी का हाई ब्रेक होगा तभी तो एंटर करेंगे ना, डोजी पे तो एंटर नहीं कर रहे, डोजी का हाई ब्रेक होगा तभी एंटर कर रहे हैं, और उसके नीचे हमारा एसएल हो रहा है, दैट्स इट। ये थोड़ा सा ये रिस्क टेकर्स के लिए है, मतलब ये नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए है ही नहीं, समझ लीजिए। इसको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए है भी नहीं। ये इसको करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए आपको, इतना आसान नहीं होगा। स्टॉप लॉस भी आएंगे, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या होता है, डोजी बनता है डायरेक्टली एट द टारगेट जोन, हाई ब्रोकन, वी बाई, डन, है ना। यहाँ पे देखिए सेम टाइम यहाँ पे ये डोजी बन रहा है एंड डन, यहाँ पे भी इसका हिट हो रहा है, और क्या बोले, यही तो है स्ट्रैटेजी। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में और एक्सप्लेन करता हूँ। how can you take the benefit from the alert update? I already taught you on the first half of the class. Okay, I'll explain more in English, don't worry. Okay, someone is telling me that I am very short tempered. Okay, no problem, thank you for telling me that. I'll take care of it. Okay, now in this scenario, as you can see, the price came, but the price breached the target zone. That's the problem, right? It created a doji here, but the next candle didn't break the low. So there is no short entry, and by the time it has created a doji, it has already broken out on the upper side. So this is how you don't take the trade. Yes, definitely. अगर confluence रहेगा, when both the charts speaks the same story, that is actually the best, na? By doing so, you will get less trades, but better trades. यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। नो, देयर इज़ नो ट्रेड। ये वाला कौन सा था, 939, क्या होता है 939 को? ये वाला कैंडल 10 कैंडल है, 939 का नहीं है। ये देखिए, हियर द प्राइस केम टू द टारगेट जोन एट दिस एरिया, इट क्रिएटेड ए डोजी, बट द हाई डिडंट ब्रीच, द लोअर साइड ब्रीच्ड actually, and it gave the first lower side momentum. ये वाला सही था यार। ये जो देखिए, ये जो दिन का जो जब स्टार्ट हुआ ना, ये कुछ बुरा नहीं था। यहाँ पे टारगेट जोन पे आया, टारगेट जोन पे काफ़ी अच्छा इसने फॉल भी दिया। बस इनको कैप्चर करना ना आपको एक्सपीरियंस लगेगा, क्योंकि क्या है ना, देयर इज़ नो रिवर्सल फॉर्मेशन इन इट।
There is no reversal formation in it. That's the problem. Now what you need to do from tomorrow is you need to watch my trades, or what you can do is you can go to my free channel, and when the trades that I have taken at the time, you need to watch the chart why I did take the trade, because I use this same formula, same thing. I am using this every day. You will get much better experience in that, and from tomorrow also you can monitor that as well. Sometimes it will fail, definitely, but majority of the time it will give you much better risk and reward. विदाउट टारगेट जोन आपको अगर ट्रेड करना है, आपको देखना है कि प्राइस का ऑरिजिन कहाँ पे हो रहा है. विदाउट टारगेट जोन, इफ यू वांट टू ट्रेड, यू नीड टू सी वेयर द प्राइस इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम. Let me show you how. It is much more difficult and complex. Okay, let me show you. ये क्विक मोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. अब मैं क्या बताऊँ, अगर कॉम्प्लेक्स है तो है ना. मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड लेनी है, ये देखिए, अंडरस्टैंड दिस. वेयर द प्राइस इज ऑरिजिनेटिंग, द प्राइस इज ऑरिजिनेटिंग एट द डिमांड जोन. बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग एट द डिमांड जोन and created a green candle, right? Created a green candle. It even broke the supply area. So अगर इसने supply area तोड़ा है and it's originating from a zone, then it will move on to the next zone, which is the target area. This is how I trade when I don't get any trades from supply and demand. I mean from the target area. As I said, it is much more complex. It's based on pure observation. There is no strategy in it. I just look at the origin. हाँ, सब कुछ एक्सेप्ट तो करना ही है ना सर. देखिए यहाँ पे सेम थिंग. ये देखिए, the price has originated here as per the week, and it has moved on and breached the above zone and it moved on to the next zone. ये है origin वाला हिस्सा. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है. एंड मॉर्निंग में अब से मैं क्या करूँगा, जो मैं फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट आई विल डू इज़, whenever I take trade in the morning, I will explain that with the chart every day, so that you can gain the live market experience on that. And that is exactly why I don't share the same trade with you guys. Why? Because whenever I enter in the trade, because this is the morning hour, because this is the first 15 and 30 minutes, buy and sell line, they don't really matter. Because this is the first 15 to 30 minutes, the trade will be so fast, you won't be able to capture it unless you are taking the trade on your own analysis. You won't be able to capture it. That is exactly why I don't share it. I share the trade on the later part of the hour by using 5 minutes or 15 minutes time frame that I have already taught you that. That's why I wait there. This is for scalpers, this one. कोई बात नहीं, इसको हम लोग और समझेंगे. We will understand more on this for the next 30 days. For the next 30 days, I will be taking 20 to 22 trades in total. I will explain every single one of them every day, so that you can get live market experience in that. ओके, तो चलिए अब इसको बंद करते हैं. अब हम लोग जाएंगे एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी का गेम कम्प्लीटली अलग है. कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे.
Now the expiry thing. Okay, great. तो start करते हैं. In your normal indicator that we have given you, what you need to do for the expiry, you select intraday and everything, whatever that there is, you will select that. You will select the border and everything. You will only add this thing, dynamic. You will come towards the lower part, time frame 1, done, and it will plot the normal supply and demand zones, as well as, this will be slow mode, as well as the dynamic zone. We need both of them. Yes, that is the main thing. रिजेक्शन पे एंट्री लेना है बोथ चार्ट्स को देख के, काम खत्म. और इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, बस ये रहेगा सेटिंग को मैं और एक बार दिखा देता हूँ. स्लो, इंट्राडे, बॉर्डर, डायनामिक time frame 1, which is daily. This code I have specifically scripted just to show you on the specific day. This is not given to you. I wanted to give it to you, this modification, so that you can plot the zones on a specific day, like Thursday expiry. You can plot it. You can choose the quick mode or slow mode, whatever you want to. But the problem is the Humble Light code is complete. Humble Light code is completely complete. We cannot add a single line of code there. That's the problem. So you cannot have that. But I will be using it for demonstration to teach you. We will be using 15 minutes time frame. Okay. Strike कहाँ पे लेना है? Now first comes the strike selection part. It is very, very important. Understand something. Every day what we are doing is we are going in the money, 100 points dip. We are going in the money, 100 points dip. But in this specific day, in this particular day, we will go slightly far OTM. Like let's say this is your opening price. This is the red candle opening. So this is your opening price. This will be your strike for put. This will be your strike for call. Okay, this will be your strike for put, this will be your strike for call, slight OTM. And the premium will be around 40 rupees or something. Basically, I specifically trade with 40 rupees premium, 40 to 45 rupees premium mostly. That's my premium of choice. Now, how do I take the trade? It's pretty much simple. I look for rejection or breakdown. Same strategy that I use. यहाँ पे क्या होता है? Breakdown, low broken, breakdown, low broken, you enter for the target zone. Done. Okay, that's it. But I entered here at the same day because I have noticed something. It's very interesting to see. Majority of the time, on the majority of the expiries, you will see whenever the 15 minutes candle rejecting from somewhere, it will move on to the other part of the chart. Let's say the first 15-minute chart is rejecting from here, then it will shift to demand zone. The price will move to demand zone. Majority of the time you will see. I'll show you. देखिए, यहाँ पे तो एंट्री आपका क्लियर ही था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड लो ब्रोकन, ब्रेकडाउन लो ब्रोकन, द सेम स्ट्रैटेजी दैट आई टॉट यू. टारगेट जोन तक आ गया. अब देखिए प्रीवियस वाला थर्सडे, इसलिए मैंने कहा था, that's why I told you to add dynamic as well, because that day even dynamic will react. So what is dynamic zone? Dynamic zone is basically average of last 14 periods of last 14 days or 22 days, depends on the code. It's the last 22 days of high, last 22 days of low, average. The average of last 22 days of high, last 22 days of low. That is the dynamic zone. So basically it's predicting the range of the whole last month. Now, as you can see, it has created a bullish engulfing here. The price has given a rejection here.
A doji, high broken, and done. It came to the next part of the zone. Such a simple thing, isn't it? अगर आपका प्रीमियम ऑफ चॉइस यहाँ पे है कॉल के लिए, तो ये तब तक डबल हो चुका है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल डबल योर कैपिटल ऑन एक्सपायरीज. यहाँ पे देखिए मैजिक, देखिए ये वाला कमाल है. सी परफेक्ट है ना यार. सीरियसली आई लव माई जोन्स. I love my zones. See, this is a rejection from the zone. Same concept. It reached the other side of the zone. Let's say you missed it. Still, this is so many rejection from the dynamic, and it came down to the dynamic. जिस जोन पे काम कर रहे हैं उसी जोन पे ही आएगा. ये है फंडा. समझ रहे हैं ना? कमाल है. I know I'm bragging a little bit, but this is so cool. You can almost in every expiry you can double your capital. Almost in every expiry. At least you can increase it by 50%. Majority of the time. देखिए और एक एक्सपायरी देख लेते हैं. इतना आसान है एक्सपायरी में ट्रेड करना. आपका इसलिए इतनी आसानी से हिट भी नहीं होगा. ये देखिए, there is no rejection on anywhere. There is no rejection on the anywhere on the bottom side, but there is rejection on the top side. This is a rejection candle. I mean, this is a red candle. We can consider it as a rejection. But the low wasn't broken, so the price didn't come down. Here also, the low wasn't broken, so the price didn't come down. So the rejection formula didn't work. No problem. We will wait on the breakout. This one, breakout and retest, breakout and high break was happened. This is also the breakout and high break was happened. And it closed above the dynamic as well. It closed above the dynamic as well. So what does it mean? That means it will reach to the next zone. That means it will reach to the next zone, and it happened. Although it took time, but it reached. Such a simple thing. हर एक थर्सडे को आपको ऐसा मौका मिलेगा. बहुत ही रेयर होता है. इट्स वेरी रेयर. It's very rare when the Thursday expiry goes really sideways. Majority of the time you will see good trending market. Obviously हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस तो हो सकता है ना, लेकिन उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. जैसे देखिए, मतलब ये तो आपको क्लियरली आपके आंखों के सामने है ना ये वाला चीज़. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एक्चुअली मिस्ड. The important thing is, do not trade on the later part of the expiry. I mean after 12 or after 1 or after 2. Definitely the last momentum, the last final, which the majority of the people say gamma move, gamma spike and all. That kind of move happens at the last part. But the thing is, it will be much better if you trade the first 30 minutes or the first 1 hour. That will give you much faster money and much quicker money. Make the money and get out. Don't wait for the last part, because the longer you wait, your mind will tell you that here is a rejection, take the trade, take this trade, take that trade, and you will waste every bit of it. That's the main part. It is your war against your mind. That's why complete your trade fast. Either it will be profit, either it will be loss. Whatever happens, get out. Can you see? Rejection. What does that mean? Low broken. That means the price will come to the next zone. Done. आपका पैसा डबल हो गया. Yes, this is the secret. यही है secret. Basically, the secret is, on the expiry day, the zones work with much better accuracy. That's the secret. There is no other secret in it. The zone works every day, but on expiry day it works especially better, exceptionally better. और क्या बोले, परफेक्ट है भैया. ये देखिए, ओहो कमाल है. देखिए हैमर, ये भी हैमर, ग्रीन वाला हैमर. हाई टूट गया एंड यू अप. इट शुड कम हियर, बट इन द फ्यूचर चार्ट इट केम टू द सप्लाई. सो बेसिकली दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर कोरिलेटिंग बोथ द चार्ट्स ना. Whenever it comes to supply, you exit. काम खत्म, पैसा हजम. आपको समझ में आ रहा है?
यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं और एक ट्रेड कहाँ पे बन सकता था? देखिए, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, लो ब्रोकन, break down, low broken, price came to the next zone, price came to the almost to the next zone here. This also a trade. This could also double your money depending on the strike price or the entry time. आपको समझ में आ रहा है एक्सपायरी वाला चीज़? अरे यार, ये वाला तो परफेक्ट है, मतलब इससे परफेक्ट कुछ शायद हो ही नहीं सकता, इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे कोई लॉन्ग करेगा ही नहीं। अगर वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी होगा ना तो ये लॉन्ग करेगा भी नहीं यहाँ पे कोई। मतलब यहाँ पे और क्या बोलूँ यार, इससे बढ़िया रिजेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। ये इनसाइड बार हो गया, ब्रेक डाउन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, आ गया, काम ख़त्म करो, ट्रेड हो गया, डबल हो गया पैसा। यस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द सेटिंग इन ऑफ द हम्बल लाइट इन दिस। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हम्बल लाइट में क्या सेटिंग करना है इसका। स्लो, इंट्राडे, बॉर्डर लगा लीजिए, डायनेमिक, कम डाउन बिलो, डायनेमिक टाइम फ्रेम 1, दैट्स इट। यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी? यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी? आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो टॉप में नहीं आया, यहाँ पे तो आ गया ना। आप क्या बोले? कोई भी एक चार्ट आना चाहिए, एक चार्ट आ गया तो आपका एग्जिट हो जाएगा, आप होल्ड नहीं करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन शायद आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए। और एक चीज़ है, व्हेन यू आर एंटरिंग इन हीरो जीरो, लेट्स से यू आर एंटरिंग हीरो जीरो हियर बाय सम काइंड ऑफ रिजेक्शन लाइक 3 minutes रिजेक्शन और वट एवर, it doesn't really matter. Whenever you are entering in a hero zero, do not keep big stop loss. Do not wait for it to go to zero, because if you enter hero zero here, then what is your logical stop loss? Your logical stop loss is below the zone. When the price comes below the zone, there is no point for you to hold on to it. Exit the position. हीरो और ज़ीरो मतलब ये नहीं कि पूरा ज़ीरो के लिए वेट करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, ख़त्म करो। मार्केट में होप का कोई इशारा ही नहीं है, मतलब होप करना ही नहीं है। नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा, ये वाला मॉडिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। मैंने ट्राई किया था ऐड करना, लेकिन हम्बल लाइट में कोई कोडिंग का लिमिट ही नहीं बचा। लिमिट क्रॉस का मतलब लिमिट फुल हो गया, वहाँ पे एक लाइन हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब ये जो डे स्पेसिफिक वाला फंक्शन हम ऐड नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूरा हिस्ट्री मिलेगा, डे स्पेसिफिक आप नहीं जा सकते। देखिए देखिए ये वाला कितना परफेक्ट है, मतलब दिस इज सो परफेक्ट, दिस इज सो परफेक्ट। सी, पिन बार रिजेक्शन एकदम परफेक्ट है। पिन बार रिजेक्शन, लो ब्रोकन, प्राइस केम टू द डिमांड जोन, प्राइस केम टू द डिमांड जोन बिकॉज इट ओरिजिनेटेड एट द सप्लाई जोन। सेम थिंग। Someone told me that, sir, when you take the class, explain the divergence concept one more time. This is a divergence, I think, because the price is creating lower low. The price is creating lower low. I think there should be a divergence in this. Yes, this is a divergence. See, the price has created a higher low on the RSI. The price has created a higher low on the RSI. So there is a 15-minute divergence as well. This is a 15-minute divergence because the price has created lower low, and this is price has created a higher low. This is what divergence look like. You can take trade on the inside bar break here. Inside bar high broken, your SL will be below this zone. You don't wait for it to go to zero. You never wait for it to go to zero. मार्केट में होप नहीं करना है। There is no place for hope in the market. तो यहाँ पे कौन सा वाला मंथ चल रहा है यार? मई मंथ तक हम पहुँच गए। चलिए, हाँ, ये वाला तो सीधा सीधा एसएल है, डायरेक्टली ये एसएल होगा। देखिए, दिस इज योर 15-minute डोजी, जीरो डोजी, एकदम परफेक्ट वन। बट द प्रॉब्लम इज this is also doji created, here is also doji created, but the problem is it breached the zone already, so we cannot rely on it completely. अगर आप फिर भी ट्रेड करेंगे, फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अराउंड
18-20 पॉइंट का समथिंग, विच इज़ 1000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होता है. एस एल विल बी बिलो दिस, सो 22 पॉइंट्स एस एल. दिस डजेंट वर्थ इट. और सच बताऊं, अगर मैं होता तो मैं शायद एंटर कर जाता यहाँ पे, लेकिन मेरा एस एल हिट हो जाता यहाँ पे. ये भी बात है. But with little bit of experience, you will be able to understand how, where not to trade. In this area, it was perfect, broken down, gave the low. The low was broken down. The low wasn't broken by the next candle, but the next candle after that, and it gave the target. So even if you hit your stop loss one time, you can easily recover it twice as much. थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है. चलिए, ये वाला चीज़ आपको समझ में आया, एक्सपायरी वाला चीज़. देखिए, दोनों में अगर कर जाए तो आप एसएल ले सकते हैं, या फिर अगर एक में भी हो गया आप एसएल ले सकते हैं. मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ कि आज कौन सा जोन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. देखिए, you need to understand which zone, which chart is reacting more. Someday future will react more, like in this section here. The future is reacting more. As I said, I would have entered. Why? Because the future is reacting more. Why the future is reacting more? Why are we saying that? Because the spot has already broken and it is not respecting the zone as much. But the future is respecting the zone dot to dot. That is exactly why we can say the future is reacting more. And if there is my position here, I will exit below this and I might re-enter here with the SL above this candle. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और एग्जाम्पल देखेंगे ना, हमारे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं. हर एक दिन, हर एक थर्सडे को बनेगा ना, टेंशन की कोई बात नहीं है. ओके. As I said, there is no good rejection. This is not a good rejection. But this is rejection nonetheless. So we can take the trade on the high break. And it didn't reach the supply zone. Throughout the same day, it was sideways. Throughout the whole day. But कुछ तो मिल ही जाता है यार. मतलब 30 पॉइंट्स कुछ तो मिल ही जाता है. बहुत कुछ खास नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुछ ही मिल पाएगा शायद. ऐसे सिनेरियोज, दिस सिनेरियोज आर वेरी वेरी रेयर टू गो फॉर द प्राइस टू गो साइडवेज थ्रू आउट द होल डे. बट इफ यू ट्रेड द फ्यूचर लॉट, then you can easily gain 1% in a single day. In 50 days, you can get 50% return. That is minimum. अब फ्यूचर चार्ट से फ्यूचर का ही पोजीशन आप ले सकते हैं. स्पॉट को आप डील नहीं कर सकते. किसी भी एसेट में स्पॉट को आप डील नहीं कर सकते. आप ओनली फ्यूचर को डील कर सकते हो. मतलब ऐसे वाले इंडेक्स वगैरह या कमोडिटी में आपको सिर्फ फ्यूचर में डील करना है. देखिए यहाँ पे क्या होता है. दिस इज, वी कैन कंसिडर इट एज ए रिजेक्शन, बट द लो वाजंट ब्रोकन. वी कैन कंसिडर इट एज ए रिजेक्शन इनसाइड बार, वट एवर. द लो वाजंट ब्रोकन, हाई वॉज ब्रोकन, high was breached, high was broken, high was breached. What does that mean? The next zone is on the cards. Your पैसा is doubled. हाँ, मैंने ट्राई किया था यार इस सेटिंग को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ. ओवर स्क्रिप्ट में भी नहीं लगा सकता इसको, तो फिर मुझे न्यू स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा और सबको एक्सेस देना पड़ेगा. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मतलब हज़ारों लोगों को अगर एक्सेस देना बैठ के ना, बहुत प्रॉब्लम होता है. एनीवे, चलिए देख लेते हैं. रिजेक्शन कैंडल, लो वाजंट ब्रोकन. रिजेक्शन कैंडल, immediate, the next candle didn't break the low. Low should be broken or the high should be broken by the next candle. That's the very important part. Immediate next candle. This breakout happened, high was broken. This breakout happened, high was broken. The price also closed above the dynamic zone, which is very important. The price also closed above the dynamic zone, which also very important. And then the price reached the target. Dynamic को हमने किस लिए रखा? Why did we keep the dynamic zone here? We kept the dynamic zone to filter out this breakout.
to filter out this breakout. When the breakout is done, the price should close above dynamic zone as well for the filtering process. If this is done, then it will reach the target. यहाँ पे देखिए, मतलब ये तो सीधा सीधा जैकपॉट है. दिस इज प्योरली जैकपॉट है ना. यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी? आप बताइए. तो ऐसे दिन जब मिल जाए ना, मज़ा आ जाए एकदम से. मतलब उसी दिन आपका पैसा डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा एक दिन में. इसलिए मुझे एक्सपायरी इतना ज़्यादा पसंद है यार. एंड दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ एक्सपायरी, इन एवरी एसेट. सेम थिंग, सेम स्ट्रेटेजी. ओके, आपको ये समझ में आया एक्सपायरी वाला सीन? अब बताओ. आई होप कि आज क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई पिछले दिन की तरह. Okay, everyone understood, right? Definitely we can use it on Sensex, we can use it on anywhere, in any asset. The system is pretty simple. On expiry day, yes, on expiry day you can take OTM. Not the far OTM, but nearest OTM. Let's suppose your entry on the low break here, so your OTM of choice will be this area, nearest 50 strikes or 100 strikes, whatever that is, this area, because when it comes to this, it will be doubled. But if you take in the money, it will not be doubled, because in the money premium is too high on that day. It will not be doubled. Yes, live alert link, I'll share it one more time. Don't worry. In the private trade groups, in the personal trade groups, I'll share it one more time. Okay, someone didn't understand it. Let me go through it one more time. Okay. Basically, what we are looking at is, we are looking at any kind of rejection formation. Let's say this is a rejection formation. This is a rejection formation which is bullish engulfing. Right? This is not a bullish engulfing on the future chart, but this is a doji. This is good. So we can trade on this, on the breakout. You will say, let's say we entered here. Our SL will be below this, and in this area our SL is hit, right? No. In the expiry day, we wait for the closing of the candle, 15 minutes. There is a reason for it, because on the expiry day, price movement and specifically the option premium movement will be too much erratic. You cannot keep a stop loss in option. You always keep a stop loss on spot or future chart, whatever the chart you are following. Basically, you need to keep it on the closing basis. Yes, in 15 minutes, many things can happen. It can create a massive red candle. That is also true. But this is exactly why we have added the dynamic zone as well for an extra layer of protection, and it is directly on the demand zone. So the demand zone is especially strong. Even if it creates a massive red candle, still your premium will not become zero. Maybe a little bit bigger SL will go, but the premium will not be zero. And you can see the reward. Throughout the whole day, we can actually wait for the target to come. And throughout the whole day, it only went up. And none of them reached the target till the closing level. Okay, this is a very problematic scenario. यहाँ पे जो एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका SL हिट ही हो जाएगा. Because there is no rejection formation on the demand. The price
almost created a rejection formation, but it missed the demand zone by just मतलब कितना बोले यार, few inches, मतलब थोड़ा सा. यहाँ पे हमारा प्राइस क्या था, लो प्राइस था समवेयर अराउंड 84, द डिमांड स्टार्ट होता है 8. एक पॉइंट के लिए इसने डिमांड जोन मिस कर दिया. फॉर जस्ट 1 पॉइंट इट मिस द डिमांड. अगर आप थोड़ा सा समझदार होंगे, एक्सपीरियंस होगा, इफ़ यू हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस, यू कैन ईजिली ट्रेड दिस एंड यू कैन कैप्चर दिस मोमेंटम. बट इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, then you will miss this entry and you will definitely take this entry, and this entry will not give you much profit. As you can see, it will make your capital zero, because you will wait for the next zone to come and it didn't come throughout the day, and ultimately it closed as zero. That's the problematic scenario, but these are very rare. Obviously every strategy will have some drawbacks, so some SL will be there, but do not wait for the price to get zero. Okay, ओके तो हम लोग ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारी. अप्रैल तक चले गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 months का हमने बैक टेस्टिंग कर लिया है, 4 महीने का. आई थिंक दैट वाज इनफ. आपको अब से अच्छी तरह से देखना है, नेक्स्ट मार्केट से, नेक्स्ट एक्सपायरी से समझना है, पेपर ट्रेड करना है, ट्रेड विद निफ्टी 20. लेट मी शो यू हाउ टू ट्रेड विद निफ्टी 20. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 20 का चार्ट ऐड करेंगे. निफ्टी 20, वी आर एडिंग द BSE चार्ट, नॉट द NSE चार्ट. वी आर एडिंग द BSE चार्ट. आ जा मेरा बेटा. 6 तारीख को कौन सा वाला था, जुलाई 6 तारीख को मिल गया, ये वाला था. ओके, दिस इज जुलाई. ओके, सो आवर एंट्री वाज हियर, लेट्स से हियर. तो इसका मतलब थर्ड, 1 2 3 चौथे कैंडल पे एंटर हो रहा है, 1 2 3 चौथे कैंडल पे एंटर हो रहा है. कुछ इस एरिया पे हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है, कुछ इस एरिया पे हमारा एंट्री बनेगा, एंड दिस विल बी आवर एंट्री. सो यहाँ पे आपको कितना मिल सकता है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज वाइज you would have gotten 72 points, which is 3.34%, 0.34%. यहाँ पे आपका मूवमेंट, यहाँ पे आपका होल्ड है, मूवमेंट कितना आया, 0.55%. यहाँ पे आपको 0.34% मिलेगा. कुछ खास नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा काफ़ी अच्छा, ठीक है. आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा. 20 बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस के लिए. हेवी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए ना, यू कैन ट्रेड विद हेवी क्वांटिटी. इफ़ यू वांट टू यू कैन ट्रेड विद 20,000 रुपीज़ विद 5x लेवरेज, विच इज़ 1 लाख रुपीज़ ऑफ बीज यू कैन बाई. ओके, 6 अप्रैल, हाँ सही है, ये तो जुलाई देख रहा हूँ मैं. सॉरी, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर नहीं आता. जून, अच्छा चलिए, इसमें ना एक फंक्शन होता है इनका. हाँ, 6 जुलाई गो टू, मिल गया. दिस वन आई गेस, तरीका 6 अप्रैल है. मिल गया. देखिए उतना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर नहीं आता. ये देखिए यहाँ पे 0.55% का 0.55% का मूवमेंट आया था, यहाँ पे आपको 0.66% का मूवमेंट मिला. सो विच इज़ एक्चुअली बिगर. हियर यू वुड हैव गॉटन अराउंड 0.58% मूवमेंट, एंड यू हैव गॉटन हियर 0.68%, 0.67% मूवमेंट. सो दैट इज़ नॉट बैड यार, है ना. ये भी अप्रैल का है फाइनली. तो हाँ, 6 अप्रैल. सो आपको 20 में ज़्यादा ही मिला, कम नहीं मिला, ज़्यादा ही मिल गया आपको. सो ट्रेड विद 20, practice with bees, your SL size will be reduced, your loss size will be reduced, but your experience will be much better. It's better than options, it's better than futures for the beginner traders. Okay, from tomorrow itself start trading with bees rather than options. It will create good habit in you. It will give you 100 trades experience with very small SL, and it will make you much better and mature trader.
I hope my point is clear here. So I hope everyone understood. I thought of teaching you the monthly, daily, and weekly zones together and everything, but I will not cover this in the class. There is a reason for it, because I have already gone through many complex things. In the commodity class, we will be using them in combination, and I will teach you then this formation, this thing. I will teach you then. I think it will be much better suited there. It will be much better for you, because I have already covered too many complex things. आपको समझ में आया? आपको एंट्री समझना है फिर से? ये आपका एंट्री है सर. This is your entry. This is the rejection formation. This is your entry on the high break of the rejection formation. Yes, Nifty Bs can be bought and sold intraday. There is no restrictions in it. नहीं, for trading on BSC we need to see, नहीं BSC you can see NSE chart. I am looking at BSC chart because BSC chart has less tracking error. Let me show you. यहाँ पे निफ्टी बीज NSE चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको. This is Nifty B's NSE chart. Can you see these longer weeks and all? These are actually tracking errors. Okay, but in BSC chart you will see none of the tracking error. एक मिनट. In the Nifty B's, in the Bank B's, in the Nifty B's chart, there will be no tracking error. As you can see, these longer weeks and all, these are tracking errors. But BSC chart will give you much cleaner view. Okay, the class is over, and if you have any more question, I want you to rewatch the class one more time. I am stopping the recording. I'll upload the recording in some time. I want you to watch the recording one more time, and after that, whatever question you have, you can ask me in your own group. I'll definitely answer every single one of them. Okay? Thank you, everyone. Okay, stop streaming.